हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो एक्रेशिया डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो फ्रेंड्स, यू नो दैट एक्रेशिया रिव्यू हैज़ बीन पेंडिंग सिंस लास्ट 2 इयर्स। तो यहाँ पे जो रिव्यू है वो हैपन होना था लास्ट ईयर अप्रैल मई 2024 एंड दिस ईयर अप्रैल मई 2025। तो उसमें यहाँ पे जो रिव्यू है, रिवीजन है एक्सग्रेशिया की अमाउंट में, वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो सर्कुलर है, मैनी अ टाइम इट हैज़ हैपन्ड, बट ऑन द ग्राउंड जो रिव्यू है वो अभी तक नहीं हुआ है। सो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न राइट नाउ फॉर लैक्स ऑफ द बैंक पेंशनर्स. If we include the family members, the figure goes in millions. So, friends, the matter has been written thoroughly, I would say very thoroughly, to CLC, Chief Labour Commissioner, Office of CLC, Government of India, Ministry of Labour and Employment. सो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्प्यूट अगेंस्ट IBA and all the PSBs has been written in relation to the ex gratia review. So friends, we are in receipt of your letter and the letter of National Convener United Forum of B Bankers. They have referred to the clause 36 of BPS 8th March 2024 between the bank representations and the IBA, and they have contended that as per the said clause of the settlement, ex gratia payment would be made in lieu of the pension revision. सो दोस्तों, आपको याद होगा 8 मार्च 2024 को जो सेटलमेंट साइंड हुई है उसमें क्लियरली मेंशन था भी आप पेंशन रिवीजन की जगह पे हम लोग आपको एक्स ग्रेशिया देंगे, एंड दे हैव फर्दर contended that no such revision has been made to the prejudice of the retired bank employees. So in this context, we would submit that the aforesaid United Forum of B Banker is not authorized representative body of either the workmen or the officers, so mandated by the member banks of IBA to participate in the BPS. So they were not signatories to the settlement जो कि साइंड हुई है 8 मार्च 2024 को. So it would not be out of place to mention that the industrial dispute raised by United Pharma B bankers does not hold ground, since the BPS has been signed between the United Pharma bank unions, recognized and authorized by the member banks and the IBA. So specifically mandated by the member banks. So this said form does not have the locus standi to raise a dispute originating from the BPS of which they are not a signatory. सो यूनाइटेड फार्मा बैंक बी बैंकर्स जो कि एक बहुत राइट नाउ पॉपुलर यूनियन है, वो सेटलमेंट की पार्टी नहीं थी एंड दे वर नॉट recognized as a authorized party in the settlement जो 8 मार्च 2024 को साइन हुई है. सो इस वजह से वो डिस्प्यूट जो कि एक्स ग्रेशिया रिव्यू का है वो नहीं उठा सकते. द यूनियन एसोसिएशंस have been demanding periodical updation of pension along with the wage revision settlement. The issue regarding updating of pension is already sub judice before various courts, including the Honorable Supreme Court. The Union Association requested that, without prejudice to the court cases, some ex gratia may be extended to the pensioners, family pensioners, and it has been agreed that some ex gratia amount could be considered for current period, that is 1st November 22 to 31st October 2027. So next review of ex gratia amount shall be undertaken in April 24 and thereafter shall be subjected to review annually and as mutually agreed between IPA and the unions. So without prejudice to the court cases in various litigations relating to the pension scheme, including the demand for updation of pension for past retirees,
The payment of ex gratia should be no way under any circumstances be constructed as a reason of pension and a step against IBA stand in the courts, including the Honorable Supreme Court. So, thus, nowhere ex gratia payment would be made in lieu of revision, updation of pension has been mentioned. So, similarly, complying to the provisions of the signed bipartite review of ex gratia amount has been undertaken in April 24 and April 25 in mutual agreement with unions. So we therefore request you to close the dispute of the complaint and circumstances mentioned above. So यहाँ पे इस पूरे मैटर को क्लोज करने की अनुमति दे दी गई है बाय द HR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो आप देख सकते हैं बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन. सो दैट्स अ वेरी mysterious case that has been taken by the union. तो उसका जो रिप्लाई है वो मिस्टीरियस है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से. फाइनली द मैटर हैज़ बीन क्लोज. सो वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज द डिस्प्यूट of complaint under the circumstances mentioned above. So with this you can see the ex gratia review का जो dispute था जो कि बी बैंकर्स की तरफ से उठाया गया था, that has been closed because the first point was that United Pharma B bankers were not the authorized party in the settlement जो कि 8 मार्च 2024 को हैपन हुई है. तो उसमें वो पार्टी नहीं थी and the party was United Pharma Bank Unions. So let's see क्या important updates आएंगी from the IBA and other unions. So we will keep on updating you with that. So please make sure to share this update and subscribe to the channel friends for the latest banking, pension and related upcoming updates के लिए यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो कि अभी 1 नवंबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2027 तक की है. सो एक्स ग्रेशिया यहाँ पे बेसिकली दोस्तों 5 इयर्स के लिए है. सो 2027 में एज यू नो हमारी जो सैलरी रिवाइज होनी है बैंक एम्प्लॉयज़ की उसके साथ देखेंगे एक्स ग्रेशिया आगे कंटिन्यू करेगा जहाँ वो भी रिवाइज होगा जहाँ वो कैंसिल होगा. सो दैट्स इट. सो प्लीज़ लाइक द एफर्ट्स.